Perhaps this puja vacation. After this puja vacation. It depends on the interest of the students. If the students are interested, they have to do something. If the students are not interested, how we can so many students are there in the class. They still love spoken English. So many students are there, boys and girls, but it is not mandatory for almost all you. But interested students may take their classes. That is the beneficial for spoken English when you are a student of arts. Science or commerce, that doesn't matter. If you have the benediction relating to communication skill, it will help a lot. Without the communication skill, learning English is even English. Okay, students, we have covered up certain more chapters relating to first chapter, that is stopping by woods and snow evening, and thereafter the approach chapter, that is standing up for yourself. For students, we have gone through certain more chapters relating to countable and uncountable nouns. Relating to countable and uncountable noun, I have detected certain more chapters relating to English grammar. But we have yet to start invitation 4. Do you have invitation 4? No. Why? Saitya? Listen, students. Do you have English book 4? Invitation 4? Listen. We have gone through, students, several questions relating to countable and uncountable nouns in our first class. आम डिस्कशन करथिले नाउन आउ तार वेरियस टाइप्स बाबदरे सेतळ प्राय हमर न्यू पिला किछि आसे नथिले फ्रेशर पिला आसे नथिले नाउन रो डेफिनेशन आउ टाइप्स ऑफ नाउन बाबदरे हम डिस्कशन करथिले सो फॉर योर बेटरमेंट स्टूडेंट्स जो माने को कवर अप करथिलो नाउन तार टाइप्स कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन मैटरल नाउन कलेक्टिव नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. These are the 5 categories, but in a modern sense or modern English, we can divide them as a countable and uncountable nouns. Tejas, open your book and you are invited to go through the contents. The first chapter is relating to countable and uncountable nouns. Countable and uncountable nouns, जो वेंचर अधिक बुक अच्छे झियो कोटिए गोटे दियो रूम रे अछु ह नै आसुनो एटे अछु काय करछ नै. So students, countable and uncountable nouns. Section 1, study the following dialogue. Mother, we have run out of rice, flour, butter, and a few other things. Father, all right. I shall make a shopping list. I shall have to prepare a shopping list here. Let me get a piece of paper and a pen. Now, we need some sugar, tea, and milk, right? We also need 10 kilos of rice and half a liter of cooking oil, anything else. Actually, students try to understand this point. जेतेबेले हमें डिस्कशन करूचे मदर कहउचंती we have run out of, that means we have consumed what? Rice, flour, butter, and a few other things. And how we can purchase them from the market. Market ru हमें केमिति कोन purchase करिबा. Father कहले all right, I shall make a shopping list. But a shopping list I prepared kariba. Let me get a piece of paper. Paper is uncountable to certain extent, but when we tried our best to make it a formidable countable sense, let me get a piece of paper, but a piece of paper, and a pen. It became countable. Now we need some sugar, tea, and milk. All right. We also need 10 kilos of rice
rice is uncountable, but 10 kilos of rice and half a liter of cooking oil. That is also to certain quantity, half a liter. Can you pick out the nouns in the above dialogue? These nouns can be divided into two groups, nouns such as list, piece, pen, kilo, etc. are called countable nouns. That means the nouns which are counted. जब हमें count परिपरिपा से बड़ा countable nouns, while nouns such as rice, flour, butter, pepper, sugar, milk are called uncountable nouns. जोगुड़ा को काउंट करी हबनी सेगुड़ा हला अनकाउंटेबल आउ जार प्लूरल फॉर्म नाही सेटा मध्य होची अनकाउंटेबल. Countable nouns refer to things that can be counted and they have singular as well as plural forms. प्रत्येक countable noun नो singular और plural form रहिछि. For example, a pen, two pens, a piece or 10 pieces, etc. Countable nouns such as rice, sugar, milk, etc. refer to things that can't be counted. Count although some of them can be measured in kilograms, liters, etc. Usually uncountable nouns do not take plural forms such as rices, sugars, etc. Uncountable noun होची rice, rice रो हम rices लिखि परिबानी किबा sugar रो sugars लिखि परिबानी, etc. Although in some special cases which we will explain later, they can take plural forms. Actually, sugars and tea to certain extent. Certain extent में sugar और tea बदले लिखि दे परिबा. We can use numbers 1, 2, 3, etc. with countable nouns and say things like one pen, two pens, etc. But we can't use numbers with uncountable nouns. That is, we can't say things like one milk, two milks, etc. Also, we can use indefinite article a or an without countable noun. A or an use kari. Example, a pen, an egg, etc. But not with uncountable nouns. Uncountable nouns sense use kari. Usually, we can say things like a rice, a sugar, etc. Although this is possible in some special cases, which we will deal with later. जोटा कि परवर्ती stage रे हमें पढ़िबा. Generally, quantifiers in the sense words and expressions which is used to express quantity. जोटा quantity की express करे थे ताको हमें quantifier बोली कहि थाउ. देखो, such as some, a little, a lot of, etc. are used with the uncountable nouns. Example, my friend gave me some rice. Some rice. Can you borrow a little sugar from you, our neighbor? These are the terms. In sentences such as these, it is necessary to use a quantifier before the uncountable nouns because the meanings expressed is a certain quantity of something. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ quantity ରୁ ଆମେ something identify କରୁ. But in some other context, we can use uncountable nouns with a quantity. For example, uncountable noun को हमें quantity रे explain करि परिबा. I prefer tea to coffee. People suffering from diabetes should avoid sugar. देखो, tea, coffee आ पूर्वରୁ କିଛି quantity कहिछि कि କିଛି quantity देइने एमान हेले uncountable. सेमती sugar ମଧ୍ୟ uncountable. Here we are referring to tea, coffee and sugar in general. And in any particular quantity, we do not therefore use a quantifier. सेतेबेले हमें normal way जेतेबेले sugar कथा कहू, हमें जेतेबेले tea कथा कहू, coffee कथा कहू, ता पूर्वରୁ कौनसी article propose करू नाही. We will have more to say on the quantifier later. Any good dictionary of English, such as the Oxford Advanced Learners Dictionary, the best dictionary, will tell you whether a noun is countable or uncountable. को नाम ता तमे countable कहि परिबा, को नाम ता को uncountable कहि परिबा. It is important to know this because unless we know whether a noun is countable or uncountable, we may not be able to use it correctly in a sentence. जहाँ को हमें countable किंवा uncountable वाली identify न करि परिबा,
सेतेबेले आमे ताकू सेंटेंस रे यूज करि परिबा नाही। ताले पहिले एक्टिविटी 1 say whether the nouns in the list below are countable or uncountable. If you are not sure of an answer, you can consult a dictionary. The best dictionary is Oxford Advanced Learners Dictionary. Regularly minimum +2 arts पिला माने regularly minimum 5-5टा dictionary word पढ़ो। यदि 5टा पढ़िलो डेली मासको होची केते 150 ताले 6 मासरे केते 900 तमरे केते वोकाबुलरी प्रोग्रेसिव रे जीवो केते एडवांस करिवो सेही रेट रे पढ़िले निश्चित रूप में सक्सेसर हे परिबो। बुझिला लिसन ना कोन बुझ देखो ताले एक्टिविटी 1 अछि say whether the nouns in the list below are countable or uncountable. If you are not sure of an answer you can consult a dictionary. ताले कार अछि म्यूजिक अछि क्लाउड अछि लोप अछि आको टिके स्पीडली देखु ना 5 मिनिट रे सरी जीवो कॉपी रे भलो मत एक्सरसाइज ता न कर दै छै जो पिला माने टिके अछि इनविटेशन फॉर बुक अछि देखिला कोडा डाउट होछि मते पचारला कोडा काउंटेबल कोडा अनकाउंटेबल। एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 1 बुक नहीं लोप लोप मान पर रुटी लोप रो लोप्स LOAVES सेटा से पचार छै काउंटेबल और अनकाउंटेबल से सेंस रे को ए लास्ट बेंच रे जमा बुक नहीं डिस्कशन करिबा पिले रे जो टिके अधिक बुक अछि तो बुक अछि होबा बुक अछि आका पर मिसिक्री पढुनु भलो होंदा ए हॉस्टल जियो माने एट जो अच्छा तमरो बुक नहीं हॉस्टल अच्छी नेल बोई गुडे जा ए हमरो स्पेसिफाइड सार जो डेट रे कहबे लिटरेचर गोटे क्लास लैंग्वेज होबो लैंग्वेज क्लास रे इनविटेशन फोटो रेगुलरली नै आस्तबो पढे सार देबिसो एक्स्ट्रा ग्रामर बुक जो माने चाहबो एक्स्ट्रा लर्निंग पई पीसी 10 ना जानो टिके समस्त केतरे कहि देबा डिस्कशन कर स्टार्टिंग ए बा चैप्टर डिस्कशन कला पर जदि पिला ना एब्सेंट रहिले सेठी जे ब्लंडर प्रदान बहुत पिला आसे ना अरे टिके जो हमर लास्ट टू सेकंड लाइन का दे देलु बुक का दे से लाइन दे पिले देखो कार तारा प्लूरल अछि कार्स काउंटेबल टोटल डिस्कशन कर दे समस्त अटेंटिव रे तमरो बुक नहीं लास्ट लाइन नहीं एक लास्ट लाइन नलो बुक का इंग्लिश रो बुक गुडा किनि दबो बोली देखो कार हमर हला कोन काउंटेबल और अनकाउंटेबल अच्छा पिले हमर म्यूजिक अनकाउंटेबल म्यूजिक क्लाउड लो बटल चेयर एडवाइस हेयर वीडियो अनकाउंटेबल आ वीडियो रो वीडियो जो अछि तो काउंटेबल सेशंस रे हे परिबो किंतु मैक्सिमम बुक रे देछि बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नेक्स्ट स्टूडेंट पॉट काउंटेबल फ्रूट टैक्सी गर्ल वाटर अच्छा वेदर एप्पल ट्रैफिक अनकाउंटेबल ऐसा पढ़े लेदर लेदर अनकाउंटेबल फर्नीचर फर्नीचर रो सिंगुलर जो प्लुरल से एटा काउंटेबल सेंस रे यूज करा जेबो इंफॉर्मेशन so students choose the correct alternatives in the sentences below activity 2 अरे इनविटेशन फॉर बुक अछि
आनिछ हां वेरी नाइस से लास्ट लाइन ने गोटे बुक धरनियो भलो हबो पिले पेज नंबर 2 activity 2 choose the correct alternatives in the sentences below there is usually a lot of traffic or traffics in the city during working hours traffic like हाँ there is usually a lot of traffic in the city during working hours the young man is looking for a work or a job at the moment work जोटा अछि सेटा daily job is nothing but work but having certain duration जो work करथिबो that is known as job I want to make a list of candidates attending the meeting have you got a paper or some paper I want to make a list of candidates attending the meeting meeting रे जेतिकी अछंती लोक माने सेमानकर गोटे लिस्ट करिया को चाहूची have you got a paper or some paper देखो जेतेबेला हमें कहबा एक्चुअली कॉलेज रो डिस्कशन हलानी कॉलेज रो डिस्कशन हेची एटा को ए कहिचंती ना सम कहिचंती हां ए पेपर तो करेक्ट आंसर करी नबो I want to make a list of candidates attending the meeting have you got a paper next students I don't want to have a bread or bread for my breakfast bread खाली bread तमे कहबनी आ मुठी आज रात रे ब्रेड खाने तमे कोन कहछ ए ब्रेड खाइबी ना तनु पिले देखिबा हमें I don't want to have a bread or bread for my breakfast bread the girl with blonde hair or hairs lives next door hair next students good accommodation or accommodations is not available in the city accommodation good accommodation सहावस्थान गोटे बसति स्थापन करिया पई जेतिके एसेंशियल good accommodation is not available in the city we need some meat or meats for the dinner tonight meat raiba meats abani pile dekha we need some meat for the dinner tonight the old man could not carry the luggage or luggages luggage the luggages केपे हबो नाही फर्नीचर्स तेमिति हबनी प्लुरल सेंस रे एटा मध्ये लगेज रे use a and the some where required in the blank spaces below if no word is required leave the space blank below dash health is more precious than dash wealth किछि लागिबनी health is more precious than wealth हला health is more precious than wealth गोटे गोटे चैप्टर सरला पर एग्जाम हबो because to keep healthy we need good food dash sleep dash exercise we need good food हला तापरे sleep and exercise एटी कोनस्टी यूज हबो नाही क्वांटिफायर सम लगेले हे परिबो सम जो सम we need some good food sleep and exercise some लगेले चलिबो न लगेले भी चलिबो हमें देखो बर्तन कहउचे we need good food हमर भलो खाइबा दरकार किछि भलो खाइबा माने तन मु भाबुची समटा न लगेले भी किछि असुविधा नै को देखि नै सम एक्सरसाइज होबन एक्सरसाइज ता पूर्वरु कोनोसी प्रकार हमें यूज कर परिबानी पर्टिकुलरली पॉजिटिव असर्शन सम और एनी रे जतल कांसेप्ट पढिबा ये आउरी क्लियर हे जिवो औ ठीक अछि एटा बर्तन रहिला वी नीड गुड फूड स्लीप एंड एक्सरसाइज dash travel gives us dash opportunity of seeing how other people live travel पूर्वरु कोनोसी बसिबनी आर्टिकल travel gives us an opportunity travel gives us an opportunity
of seeing how other people live आधे किछि आर्टिकल यूज करिवो नाही समस्ते इंग्लिश मीडियम पिलांग भली गोटे गोटे पेंसिल नै आस्थिबो इंग्लिश रो ग्रामर क्लास रे आ पिले when we go on a journey जेतळ आमे गोटे यात्रा रे जाऊ go on a journey we should take dash notebook with us ये notebook with us आम सहित गोटे नोटबुक आमे नबा उचित we should take a notebook with us to make a note of the names of the people we meet देखा पहिले जेतबेले इन्फिनिटिव आमे विशेष करी गोटे रहउची फाइनाइट वर्ब आ गोटे होची पर्टिकुलरली आमे जेतबेले कहबा हमर आर्टिकल रे गोटे हला डेफिनाइट आ गोटे हला इंडेफिनाइट इंडेफिनाइट को गुडा हला ए अनडेफिनाइट हला द किंतु सेकंड सेंटेंस रे यदि इंडेफिनाइट आर्टिकल तार वर्ब ता यूज होउतिबो सेटा डेफिनाइट हेजिबो मु कहि देबी आई सॉ ए बॉय ऑन द रोड I saw a boy on the road. The boy is Ansuman. I saw a boy. सेठी हला हमर कोन की इंडेफिनाइट मु से बालक को जानि छै कि जानि किंतु मु जतले कहबी द बॉय इज अंशुमान ना धरले माने एटा गोटा परफेक्ट हे गेला सेठी द यूज करा नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख नोट्स ऑफ द नेम्स ऑफ द पीपल वी मेट एक्टिविटी 4 रे रहि छै there are 3 countable nouns in the list below can you find them तीनटा रहि छै countable noun से तीनटा countable noun कोन कोन There are 3 countable nouns in the list below. Can you find them? कौन रही छै देखिबा पिले मो मतरे पिले बोल्ट तो नुए जाम नुए मैच रो मैचेस मैच रे को हमें कंसीडर करबानी जदी तापर देखो स्नो सैंड विंड भी नुए फॉन वुड monkeys oh sorry money टा को अनकाउंटेबल नाउन देन हेल्प रबिश लव एगुरा सब अनकाउंटेबल चीज अनकाउंटेबल नाउन नहीं मनी टा अनकाउंटेबल रहइबो किंतु जदी हमें कहबा 1 लाख 2 crores सेटा काउंटेबल है तले पिले फूड अनकाउंटेबल बटल टा काउंटेबल इक्विपमेंट हैप्पीनेस अनकाउंटेबल कपबोर्ड काउंटेबल homework uncountable knowledge uncountable wood टा कुछ पे को सेंस रे कहू हम जणा पड़नी हमें कोन काठटा हेगला मटेरियल न wood ताको हमें जदी कहिबा wood रो पूर्वरु कोन यूज करा जियो हमें कहितले wood पूर्वरु हमें ता काउंटेबल करिया पे कोन यूज करि छे ये लॉग ऑफ wood काठटा को हमें गणी परिबानी किंतु गोटे गंडी काठ ताको हमें काउंट करि परिबा बुझि पैलो तेनु पिले हमर पर्टिकुलरली कपबोर्ड टा गोटे रहइबो बॉटल गोटे रहइबो आ गोटे रहइबो कोटा मैच रो मैचेस केतेटा मैच होईची 7टा मैच केतेटा मैच 100टा मैच एठी कोन करी हमें प्लुरल करि परिबा मैच रो मैचेस करि परिबा तापरे पिले हमर बॉटल रो बॉटल्स करि परिबा कपबोर्ड रो कपबोर्ड्स करि परिबा एई तीनटा रहिला देखो कॉलेज रे डिस्कशन हला परे जति किछि कहि थिबे यू कैन एनालाइज कइना सेक्शन 2 read the dialogue below wife what did you buy in the market husband कहले I bought a bottle of milk a packet of washing soda and a tube of chocolate a toothpaste हमें देखिबा जदी I bought a bottle of milk. Milk की काउंट करि परिबानी किंतु bottle of milk गोटे क्वांटिटी बुझेला ना नहीं ये bottle of milk 2 bottles of milk 3 bottles of milk ठीक परछ ना नहीं हां क्वांटिफायर रे ये पैकेट ऑफ वॉशिंग पाउडर 2 पैकेट्स ऑफ वॉशिंग पाउडर 3 पैकेट्स ऑफ वॉशिंग पाउडर 100 पैकेट्स ऑफ वॉशिंग पाउडर देन ये ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट 50 ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट प्लुरल सेंस रे यूज करा गला
wife, what about the bar of a chocolates? सब आनिलो काहे के bar of chocolate आनिलो chocolate को हमें count करि परिबानी किंतु bar of chocolate कहला माने ये गोटे quantity की symbolize करूची. I asked you to buy. Husband, oh dear, I completely forgot. ମୁଁ totally completely forgot କରିଛି. So look at the expressions, a bottle of milk, a packet of washing powder, and a tube of toothpaste. Each contain an uncountable noun. आपको सहित सबुबले अटैच ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି uncountable noun कौन? Milk, washing powder, toothpaste. एवढा सब uncountable. We told you earlier that the definite article এটা indefinite হবো I টা পরে n কটি যাইছি I defi পেনটা দিল Really, listen to me. We told you earlier that the indefinite article a or on or numbers 1, 2, 3, etc. can be used with the uncountable nouns. Uncountable noun रे गुड़ा use ही परिवन बोले हमें earlier कहचो. Sometimes, however, we may need to talk about an uncountable thing. Example, milk, water, bread, as if it could be counted. In English, there are certain fixed expressions which are used to refer to units of such uncountable things. A uncountable things रे unit हिसाब रे function करा जाए English रे. For example, a bottle of milk, a bar of chocolate, a stick of chalk, etc. It is necessary to know which of these units can be used appropriately with an uncountable noun. Uncountable noun सहित ए जो box देइछि match A सहित B की matching करिबा पई आमे केमिति कोन ए कॉलम दिटा को मैच करिबा. फर्स्ट होछि पिले a slice of a dash. Slice of a cake. A slice of a cake. अच्छा, a loaf of bread. A sheet of paper. A pinch of salt. A jar of sugar. A cup of, a bottle of, a cake of soap. Very nice.
ଲେଖ एग्जाम रे तुमर ए बुक रे जेतिक अछि ता सहित एक्स्ट्रा गुडा क्वेश्चन आसीबो लेख ये हीप ऑफ सैंड्स ये हीप HEAP ये हीप ऑफ सैंड SAND हीप ऑफ सैंड SAND सैंड्स तापर लिख ये बैग ऑफ शुगर ये बैग ऑफ शुगर तापर लिख ये पैकेट ऑफ सॉल्ट ये पैकेट ऑफ सॉल्ट तापर लिख ये बॉक्स ऑफ ब्रेड ये बॉक्स ऑफ ब्रेड POX ये बॉक्स ऑफ ब्रेड तापर लिख ये बॉटल ऑफ हनी ये बॉटल ऑफ हनी तापर लिख 1 ton of coal ton TON 1 ton of coal 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 कोयला coal तापर लिख 1 piece of bread 1 piece of bread PIECE piece of bread तापर लिख 1 bale of cotton bale BALE 1 bale of cotton तापर लिख 1 file of medicine PHIAL 1 file of medicine तापर लिख 1 wagon of limestone 1 wagon WAGAN 1 wagon of limestone 1 wagon of limestone तापर लिख ये बैग फुल ऑफ स्वीट्स ये बैग फुल BAG बैग FUL ये बैग फुल ऑफ स्वीट्स तापर लिख ये हैंडफुल ऑफ राइस ये हैंडफुल ऑफ राइस तापर लिख ये स्पूनफुल ऑफ शुगर ये स्पूनफुल ऑफ शुगर स्पूनफुल SPOONFUL ये स्पूनफुल ऑफ शुगर तापर लिख 1 spoonful of salt 1 spoonful of salt 1 spoonful of salt